a supply even of 1 rupee of taxable goods or services, you will fall prey to GST. Last, a person who is required to pay GST under reverse charge when he uses services for personal use below a specified category, और वो specific amount कितनी है सर, वो उसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है. That particular column has been left blank as of now. So that those are the persons excluded. Now having discussed exclusion, who are the persons included? कौन include हो गया? तब भी सर exempt goods means exempt goods. उसमें है सर regionally नहीं सर. Either in the case of exempted or non-taxable वाली में कहीं है कहीं अगर सर मैं इसको समझा. Then that is the he needs the registration. Agreed sir. Sir please appreciate two things. Taxable person, ठीक है सर. क्रॉप्स जो है वो टैक्सेबल गुड्स हैं, मैंने मना नहीं किया, बट एग्रीकल्चरिस्ट को उन्होंने टैक्सेबल पर्सन से बाहर कर दिया. सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल है, बट एम्प्लॉय को उन्होंने टैक्सेबल पर्सन से बाहर कर दिया. तो जब आपका हु इज टू पे टैक्स है वो बाहर हो गए, नो लॉन्गर द टैक्सेस नीड टू बी पेड. सिमिलरली एनी पर्सन जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है, ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड एंड पे टैक्स. But he is excluded from the definition of taxable person if he is only and exclusively dealing in exempted or non-taxable goods or services. ठीक है ना? So taxable person से बाहर कर दिया, उसके बाद specified person में आने का मतलब नहीं. चलिए सर, what are the specified person? Person who is supplying beyond a particular turnover. मैंने aggregate turnover सर ने मेरे से उसको पूछा था, gentleman sitting there. What is aggregate turnover? Sir, Bimal ji is also with us. Dot on time. Oh, Bimal ji, I'll take 10 minutes now to close because. Hanji sir. Now, aggregate turnover we have discussed. Anything which is exclusively, it will include your taxable, non-taxable, exempt, and exports. All kind of turnover that will be included in aggregate turnover. So kindly please see कि जब भी आपका कोई non-taxable assessee है, वो गलती से भी कोई taxable turnover ना करे. Supplier holding licenses under earlier laws, जो भी existing registered taxpayers हैं, उनको automatic registration मिल जाएगी GSTN में. They don't have a choice. They will be taken as a deemed automatic registration under GST. Yes, they will be given a provisional registration number. उन्हें 6 महीने का टाइम दिया जाएगा. 6 महीने में उनसे प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स मंगाए जाएंगे. अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो उनको वैलिड GSTN दे दिया जाएगा. अदरवाइज देयर GSTN माइट बी कैंसिल. सो दैट प्रोविजन इज देयर इन GST एज अ प्रोसीजरल मैटर. थर्ड, बायर ऑफ बिजनेस. सर बायर ऑफ बिजनेस को इन्होंने एक स्पेसिफाइड पर्सन में क्यों लिया? सो दैट ही डज नॉट एंजॉय द इनिशियल 10 लाख एग्जेम्पशन व्हिच इज देयर फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर. उसको कह दिया अगर इफ यू हैव बॉट अ बिजनेस फ्रॉम डे 1 यू हैव टू पे अ टैक्स इवन इफ योर GSTN व्हिच इज बेस्ड ऑन अ न्यू पैन इज अ न्यू नंबर. बट सिंस यू आर अ बायर ऑफ अ टैक्सेबल बिजनेस, from the day 1 you will be liable for registration and liable for payment of taxes. Same is the case in the case of amalgamation or merger. So they are also taken as a deemed person requiring registration. This is the provision, sir. Any person making interstate taxable supply. ठीक है सर, आप एक इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, आपने 1 रुपए की भी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर दी, you will be required to get yourself registered. Persons required to make payment under reverse charge. If you are required to make payment under reverse charge, you need to get registration without any threshold limit. आज की डेट में भी जो आपके traders हैं, if they pay to GTA, they are supposed to, if they are a company or a partnership firm, they need to take a registration even if they do not have a taxable turnover, irrespective of what amount of payment they have made to a GTA. Sir, advocate के केस में क्या है? Reverse charge. But advocate के केस में exemption has been given to a business entity having a turnover less than ₹10 lakhs. तो reverse charge में भी वो applicable है. सीधी anomaly. एक यहाँ पर जनरल स्टोर है, वो बेचारा महीने की 2 लाख रुपए की सेल करता है,
उसकी टोटल टर्नओवर हो गई 24 लाख रुपीस, उसने एक एडवोकेट को फीस दे दी 10,000 रुपए, he is liable to pay under reverse charge and get himself registered under service tax. सर सेम सिनेरियो अगर एक MNC इंडिया में आई है, यहाँ पे उसको अभी बिजनेस सेटअप करना है, टैक्सेबल उसकी आउटपुट कितनी है, टर्नओवर कितनी है, 0. It has paid crore of rupees to advocates. It can avail that exemption. That is the law. Anomaly of law, you can say. Please. Sir, this the concept of related party get involved in taxation. For example, I am a party in your firm and I am taxable over there and I have providing service as an individual. So will that be classed something or? Your partnership firm and you are two different persons. So whatever the services you are providing inter se, there will be a related party transaction. In case of related party transaction, the valuation rules will come into play. मैं फिर valuation पे नहीं जाना चाहता. No. For the threshold, it will not be clubbed. N number of excise judgments we have. Right, sir? Persons who are required to deduct tax. So, if you are required to deduct tax under GST, you will be, without threshold, you will be liable for registration. Agents will be required for registration. ISD, Input Service Distributor. I hope you are aware of the concept. They are not service provider, but they are head offices or corporate offices of service provider, and from there they do a dissemination or distribution of the input credit to various taxable units. So those also require registration. Person supplying goods to e-commerce operator. अगर आप e-commerce operator कौन है? For example, Amazon, for example, Flipkart. But अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और उससे कोई परचेज करता है, that is not purchased through a e-commerce operator. You are not covered in that provision. E-commerce operator will only mean when a third party under a brand sells your products also. E-commerce operator would be required to take a registration. Now these persons, irrespective of their threshold, आपने जो है एक particular board Amazon पे बेच दिया, that is the first transaction you have done. Since you have transacted through a e-commerce operator, you would be required to take registration under Schedule 3. Aggregator we have already discussed. Aggregator would be required to take registration under Schedule 3. Casual and non-resident supplier. Casual supplier कौन होता है? सर फॉरेन से एक बंदा इंडिया में एग्जीबिशन में पार्ट लेने आया, 4-5 दिन उसने पार्ट लिया, फिर वो वापस चला गया. इसी तरह आपकी स्टेट में, बाहर की स्टेट का एक व्यक्ति आया, उसने 4-5 दिन यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्ट लिया और फिर वापस चला गया. तो इंडियंस को हम कहेंगे कैजुअल सप्लायर्स और फॉरेन पर्सन्स को हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट सप्लायर्स. They, irrespective of their turnover, are required to take registration in the state in which they are coming as a temporary seller or supplier of goods and or services. UN and other specialized agencies. Sir, UN and other specialized agencies do not need to pay tax, but they have been required to take registration so that मैं अगर उनको कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूँ तो मैं GST चार्ज करूँगा और वो बाद में रिफंड मैकेनिज्म से उसको क्लेम कर लेंगे. That is the sole purpose of UN agencies getting registration under GST. Last, open-ended item, other notified person. I understand the paucity of time. We can take up question answers later because the last session is still to go. So I thank you for being such a wonderful audience.